नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में आज प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत अमेरिका संबंध, अमेरिका पाकिस्तान संबंध, अमेरिका की टैरिफ नीति, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन से जुड़े मुद्दों तथा कई अन्य सामयिक प्रश्नों के उत्तर दिए। देखा जाए तो भारत की प्रतिक्रियाएं सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं हैं, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय हितों की दिशा तय करती हैं। आज की प्रेस वार्ता में सामने आए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटो महासचिव मार्क रूटे की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए शुल्कों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट करने का दबाव बना रहे हैं। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और भी कई मुद्दों पर भारत का रुख बड़ी प्रखरता के साथ रखा है। शायद कल जो एक नोटिस आया था सोशल मीडिया पोस्ट पे हम लोगों ने देखा है कि नई टैरिफ की बात हो रही है फार्मा पे और भी अन्य कुछ पदार्थ पे, तो इस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ जो मंत्रालय जो विभाग इससे संबंधित है वो इस मामले पे नज़र रखे हैं और उस पर देख रहे हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है। विशेष जानकारी के लिए तो मैं कहूँगा कि जो संबंधित मंत्रालय हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। तो कश्मीर के मुद्दे पे हम लोगों का बयान साफ है, हमारा क्या पोजीशन रहा है पिछले गत सालों में, गत दशकों में, उससे आप सभी लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। जहाँ तक नॉर्थ साइप्रस की आपने बात कही, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो विदेश मंत्री की मीटिंग हुई साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से, उस पे ये बातचीत हुई और वहाँ पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि विदेश मंत्री ने इस बात पर बातचीत की और ये कहा गया कि हम उस बात का समर्थन करते हैं कि एक कॉम्प्रहेंसिव और लास्टिंग सेटलमेंट हो साइप्रस के मुद्दे पे इन अकॉर्डेंस विथ द अग्रीड यूएन फ्रेमवर्क एंड रेलिवेंट यूएन। हाल ही के दिनों में हम लोगों को पता चला कि कुछ और भारतीय नागरिक रूसी सेना में को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। यह बात हम लोगों को भारतीय उनके परिवारजन के मार्फत से पता चला है। इस बात को हम लोगों ने दोनों तरफ, रशिया में उनका जो यहाँ पर दूतावास है और मॉस्को में जो उनका सरकार है, दोनों के साथ हम लोगों ने फिर से उठाया है और बहुत मजबूती से उठाया है कि जल्द से जल्द जो हमारे नागरिक हैं उनको वहाँ से रिहा करा जाए। करीबन 27 लोग हैं जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, 27 लोग जो भारतीय नागरिक अभी रूसी सेना में कुछ हाल ही के दिनों में भर्ती हुए थे और उनको हम लोग वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ध्यान लेना चाहूँगा कि हम लोगों ने कई दफ़ा पहले भी एक एडवाइजरी इशू किया था कि लोग इस प्रकार का प्रलोभन देके वहाँ पर बुलाया जाता है उससे बचें। तो एक बार फिर आपके माध्यम से और आप सभी लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो वहाँ जाके रूसी सेना में जाने के भर्ती होने के बाद जो खतरा है, जो जान का खतरा है, इस पर लोग ध्यान दें और उससे जो वहाँ प्रलोभन दिया जाता है, जो जिस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, उससे लोग बचें। वी हैव seen statement by NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility and accuracy in public statements. Speculative or careless remarks that misrepresent the Prime Minister's engagement or suggest conversations that never occurred are unacceptable. As previously stated, India's energy imports are meant to ensure predictable and affordable energy cost to the Indian consumer.
India will continue taking all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. First, the number of deportations that have happened from the United States. In the last several months, since January 2025, so far we've had 2,417 Indian nationals deported or repatriated from the United States. In the case of Ms. Harjeet Kaur, she also returned recently. You are well aware of our position on migration. We want to promote legal pathways of migration. At the same time, India stands against illegal migration. Whenever there is a person who does not possess a legal status in any country and he or she is referred to us with documents, if there are claims of being that he or she is an Indian national, we do the background check, we confirm the nationality, and then we are in a position to take them back. And this is what has been happening with deportations from the United States. As far as visa fraud cases and other such matters are concerned, we have, as I told you, we want to promote legal migration from India. At the same time, we want to see how best we can clamp down or curb illegal migration, because that undermines our efforts to promote legal migration. The Government of India has been working very closely, or several ministries of Government of India has been working very closely with state governments to crack down on agents, on people who are promoting illegal migration, visa frauds that you mentioned. We have launched, So we are at the same time raising awareness about legal migration. We've also been issuing regular advisories for our nationals to stay away from, the kind of employment opportunities that are being offered in Southeast Asia that you saw, or the advisory that we recently issued on Iran, and several such movements that have taken place recently. We've also, as I told you, we also are promoting that more and more people should look at e-migrate portal, because that is comprehensive in nature. It will give you what are the steps taken, what are the steps to be taken for legal migration, which are the agencies which have been recruited, which have been certified by Government of India, and what are the do's and don'ts involved, what you have to do when you reach your destination, what sort of help can the Indian missions abroad give you, so on and so forth. So all these details are there on e-migrate portal, and I will request you to have a look. The Protectorate of Immigrants, as you know, it has offices all across India. The Ministry of External Affairs works through them, along with the state governments, to see how best we can promote legal migration and how best we can clamp down on illegal migration. You would have seen our advisory as well. We just want to tell you that in recent months, we've seen that several Indian nationals, on landing in Iran, they have been kidnapped by criminal gangs. Now, between Iran and India, we have a visa-free regime, but this visa-free regime is only valid for tourism purposes. There are agents who, in connivance with several others, they have been luring our nationals to go to Iran for employment purposes. The visa-free entry is not meant for employment purposes, and also giving them a pretext that through Iran you'll be sent across to third countries for employment opportunities. So we have taken that, we have issued an advisory so that people are aware of these facts and what has been happening, and so that they can stay away from all these people who are promoting illegal migration.
Recently, as I told you, several cases of kidnapping of Indian nationals have been reported once they landed in Tehran. We did have a meeting with SICA foreign ministers. This was held on 25th September. External Affairs Minister had a meeting with SICA foreign ministers. As you know, SICA is an important partner for us as far as South-South cooperation is concerned, and the ambit of Global South solidarity is concerned. Both SICA and India are working together to advance collaboration, cooperation in the fields of digital transformation, renewable energy, food. External Affairs Minister had a meeting with Secretary of State Mark Rubio in New York. This was on 22nd of September. In the meeting, External Affairs Minister and Secretary of State were joined by Commerce and Industry Minister from our side and USTR from the American side. We also had several officials participating in that meeting. The focus of the discussion was on trade and tariffs. Other aspects of bilateral relationship was also discussed. With regard to H-1B, let me tell you, you are aware that Ministry and our embassy in Washington, D.C., they have been in active touch with the U.S. administration. You would have seen after those changes were announced, subsequent to that, clarifications and FAQs were issued by the U.S. side on as to how it's going to play out. This is still an evolving situation and we remain engaged at various levels. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।